Hello students, today we are going to do the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris from class 10th. Let us see what Leslie Norris has said about the tigers. Here actually the poet is telling about the tigers who are kept in zoo and the ones who are found in the nature. So you must have seen tigers in the zoo and you would have seen tigers in the nature either on the Net Geo or Discovery Channel, or we have the Corbett Reserve here nearby, so you might have seen those. There is a lot of difference between the tigers at both the places. और वही चीज़ यहाँ पर पोएट ने हमें दिखाने की कोशिश की है कि दोनों जगह के टाइगर्स में क्या अंतर है, क्या उनके बिहेवियर में, क्या उनके एटीट्यूड में, क्या उनकी सोच में, कुछ उनके एक्शंस में कुछ डिफरेंस दिखाई देता है. दैट इज व्हाट द पोएट हैज शोन. यहाँ पे कहीं पोएट इज फीलिंग अ बिट pained, no, that why are tigers kept in the zoo. Let us see how is he showing this thing in the poem itself. So in the beginning the poet says he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage in pads of velvet quiet in his quiet reach. यहाँ poet क्या बता रहे हैं कि the tiger is moving in the cage. Now it is a confined area, एक बिल्कुल एक limited space होती है, छोटा सा cage होता है और वहाँ पे tiger है. And his skin is that vivid stripes, colorful, bright skin he has, and he's talking, he's moving in the cage in that confined area. But the cage is small. अगर जंगल होता है तो फ्रीली टाइगर घूमता है चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक confined area, एक limited area है जिसमें टाइगर को घूमना पड़ रहा है. तो वो घूम रहा है on pads of velvet quiet. When tigers move, have you seen cats moving? No noise at all. In the same way, when tigers move, there is no noise. So here the poet has used velvet quiet. He has compared his paws to the velvet. So which poetic device is used here? Right, metaphor is used here. Please write down, underline velvet quiet and write down metaphor. In his quiet rage. Now the poet is indicating that the tiger is full of rage, full of anger. Though he is not roaring, he is quiet because he is confined. So quiet rage. Now when we are angry we shout, but here he is quiet. So here one more poetic device, that is oxymoron. OXYMORON, oxymoron is used here. तो यहाँ पे पोएट ने बताया है टाइगर का मूवमेंट कैसा है, यहाँ पे कितनी शांति से चुपचाप, हालांकि वो बहुत गुस्से में है लेकिन बिल्कुल चुपचाप है क्योंकि वो मजबूर है, वो कन्फाइंड एरिया में है. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा. यहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई भी किया गया बिकॉज ही टाइगर इज कॉल्ड एज ही कह के बोला गया, तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. 3 पोएटिक डिवाइसेस आपको यहाँ पे मिल गए और एक सिंपल सा मीनिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. नाउ इफ ही वुड बी इन द जंगल, if the tiger would be free in the jungle, what he would be doing? He would be lurking in shadows. धूप छांव सी होती है, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे, घास के पीछे लंबी लंबी. He would be hiding. क्यों छुपा होता है? अपने प्रे के लिए, प्रे अपने शिकार के लिए. Sliding through long grass near the water hole. अब आपने देखा होगा कि क्या करते हैं ये एनिमल्स जो होते हैं, जो बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वाटर होल्स के पास, जो वाटर बॉडीज होती है जहाँ पे पूरे जंगल के जानवर पानी पीने आते हैं, ये वहां पे छुप जाते हैं उसके आसपास घास में, हरियाली में, ताकि जब जानवर आए तो ये उनके ऊपर अटैक करें एंड दे विल गेट देयर फूड. तो क्या करता है ये, अगर यहाँ केज में नहीं बंद होता तो ये क्या करता, वहां किसी वाटर बॉडी के पास जंगल में छुप के बैठा था घास में चुपचाप और वेट कर रहा होता है किसका, एक प्लम, एक फैट डियर का, ताकि जब डियर वहां आता तो ये चुपचाप स्लाइड. लुक एट द मूवमेंट. क्या मूवमेंट की बात हो रही है? स्लाइडिंग. जब हम स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, कोई आवाज नहीं होती है. तो टाइगर जो है स्लाइड करता हुआ जाता और डियर पे अटैक करता एंड ही वुड गेट हिज फूड. बट ऐसा नहीं है. ही इज इन द जू, इन अ केज, कन्फाइंड, नॉट फ्री एट ऑल. अब पोएट फिर अगले स्टैंजा में फिर से कह रहे हैं कि इफ ही वुड बी फ्री, तो दूसरा काम ये क्या कर रहा होता, दूसरा काम ये कर रहा होता कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस. क्या होता है, कई बार जंगल के पास तक गांव होते हैं, खेत होते हैं, तो रात में क्या होता है, जो टाइगर्स हैं वो घूमते हुए गांव के एजेस पे, आउटस्कर्ट्स पे आ जाते हैं, तो ये वहां पे आता और वहां पे स्नार करता, ग्राउल कर रहा होता, गुर्राता हुआ घूम रहा होता जंगल के किनारों पे, आउटस्कर्ट्स पे. Bearing his white fangs, you know fans वैसे स्नेक के लिए यूज करते हैं, बट फैंस आर शार्प टूथ. देखिए आपने 4 बड़े बड़े कैनाइन्स जो उसके होते हैं, तो वो चीज, वो अपने दांत चमकाता हुआ, गुर्राता हुआ घूम रहा होता, विलेजेस को डराता हुआ. विलेजेस मतलब द पीपल लिविंग इन द विलेज, उनको डराता हुआ यहाँ पे घूम रहा होता, अपने क्लॉज, धारदार पंजे दिखा रहा होता, दांत दिखा रहा होता, एंड पीपल वुड बी स्केयर्ड ऑफ हिम.
No, because the tiger would be free. तो क्या होता, वहां पे लोग डर रहे होते और यहाँ पे क्या है, अभी टाइगर केज में है, तो टाइगर अपने कंट्रोल में है, वो ही इज नॉट फ्री इन द नेचर. So that's why the poet is saying in the next stanza, what he is saying, that he is locked in a concrete cell. But the problem is, right now the tiger is caged. He is in a cell, in a room, concrete wall, एकदम solid concrete wall के अंदर है, ये बंद है. He is strapped behind bars. Very powerful animal, no? But बंद है ना, बार्स के पीछे है ये, और अपनी पावर को शो नहीं कर सकता, अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता, मजबूर है ये. Stalking the length of his cage, ignoring visitors, and that is why what is happening over here? It is moving around in the cage, no, looking at the visitors but ignoring them. क्यों ignore कर रहा है? Because what is his nature in freedom? He would be scaring the people, would be snarling at them, would be growling at them. But यहाँ पे he is confined, मजबूर है, बंद है. तो what is the best way? To ignore the people. People are enjoying. Here tiger is helpless. If the tiger would be in the jungle, then tiger would be powerful. People would be scared. So this is the contrast between the two. Now behind bars. Behind bars, BB sound repeated. What is there? Yes, still? Yes, alliteration. Poetic device is used over here. Now come to the last stanza. Again, here the tiger is in the zoo. He hears the last voice at night, the patrolling cars. ना अब रात के समय क्या हो रहा है, जब विजिटर्स नहीं है, कोई भी नहीं है, टाइगर अकेला है फिर से, और क्या है, अपने सेल में बैठा हुआ है, अपने केज में है, वो बंद है, और उसे बिल्कुल रात की आवाजें सुनाई दे रही है, पेट्रोलिंग कार्स की, मतलब गश्त के लिए चौकीदार पुलिस जो घूमते हैं गाड़ियों में, उसकी आवाज आ रही है उसको. He does not react. He could not do anything actually. तो उसके रिएक्शन का कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पे. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ऊपर आसमान खुला है और वो देख रहा है, जो उसकी sparkling eyes हैं, उनमें एक शाइन है, उन आईज से वो किसको देख रहा है, स्टार्स को देख रहा है. Because he is confined, he could not do anything. He is totally helpless. No, not free. So his strength is useless here. So this is what the tiger is doing in the zoo. The poet is saying that, see, for our enjoyment, what we have done, we have confined the tiger in the zoo, which is not at all good. Let them live happily, freely in their habitat. That should be there. So the poem is about this thing only. Now here, snarling sound. तो कौन सी poetic device हुई यहाँ पे? Yes, onomatopoeia. Okay, that should be there. Behind bars में आपको मैंने बता दिया already. What is there? Alliteration. So this was a glimpse of the poetic devices and the complete meaning and explanation of the poem. तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे कि suppose what is the contrast between the tiger in the zoo and outside. तो आपको दोनों कॉन्ट्रास्ट बता दिए हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रास्ट है. पोएम में दोनों चीजें बताएंगे, अलग अलग स्टेंजा में ये चीज एक्सप्लेन हो गई है. देन आपको क्या लगता है, अच्छा बीच में ना ब्रिलियंट को जैसे रिपीट किया है पोएट ने, साइलेंस को, क्वाइट को रिपीट किया है. सो व्हाई हैज द पोएट यूज दिस थिंग टू एम्फसाइज हिज पॉइंट कि जब वो केज में है तो कितना सन्नाटा है ना. तो दैट टू शो दैट ही हैज यूज्ड क्वाइट. यू कैन सी इन द फर्स्ट स्टैंजा. इन द लास्ट स्टैंजा व्हाट ही हैज डन, ब्रिलियंट टू कंपेयर द शाइन ऑफ द आईज टू द स्टार्स. सो to emphasize that point, the poet has used these words repeatedly. So this was it. Go through the poem, read it, and I would like to ask you the difference between the tiger when he is in the jungle and when he is in the zoo. So what you have to do, find out the differences, minimum 3 differences, write them down in the comment section. I will check them out and I would love to see who is the first one to give the correct answers. Till then, enjoy, happy learning. Don't forget to like, subscribe and share. Bye-bye.